आज के क्लास में ना पहले जो हम लोग कर रहे थे सीमॉस डिजाइन, जो लॉजिक गेट्स यूजिंग द सीमॉस डिजाइन, we will continue with XOR and XNOR gate, and then I will show you some more example of boolean expression जिसको हम CMOS logic से डिजाइन करेंगे. So on that we will end this topic, and next class we will start with your transmission gate. वहां से आगे भी ट्रांसमिशन गेट्स को यूज करके आप सेम लॉजिक गेट्स को डिजाइन कर सकते हो. So in today's class we will continue with the XOR gate design using CMOS logic. So before drawing the CMOS logic, first, how your XOR gates look like? It's look like this, right? So its expression, if the input is A and B and the output is Y, so Y can be written as A. This is your XOR symbol, XOR representation. So it can be written like A B bar plus B A bar. Right? This was your Boolean expression. Of XOR gate. So now if I draw the truth table of XOR gate, how it will look like? A, B, Y your output. So as it is 2 input gate, so the input will be in 4 combination: 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. So what will be the output of the truth table of XOR gate? It will be 0, 1, 1, 0. So this is the basic of XOR gate. So now what we will do, we will design the CMOS logic using the Boolean expression of XOR gate. So for this thing, you need to know one thing. First step, these are the steps you need to know. First step for designing a XOR gate, complement the Boolean expression. Whenever we will design XOR gate or XNOR gate, what we will do? First, we will complement the Boolean expression of XOR gate, or if you are drawing the XOR gate, XNOR gate, you will complement the Boolean expression of XNOR gate. This is the first step while designing a XOR gate or XNOR gate. You will complement the Boolean expression. So your initial Boolean expression was Y equal to A B bar plus B A bar. So now we will do, yes. 1 kilometer. Hello. So what you will do, you will complement this thing, the Boolean expression. So when you will complement the Boolean expression of XOR gate, it will give the Boolean expression of XNOR gate. जब आप XOR गेट के Boolean expression को उसके ऊपर बार लगाते हो, what you will get? You will get the Boolean expression of XOR gate. So what is the Boolean expression of XNOR gate? That is my Y equal to A bar B plus AB. Right? So from this expression, finally, we will design the CMOS logic. First क्या करेंगे? First we will take the XOR expression, Boolean expression. So XOR Boolean expression जो उसका है, उसको आप
कॉम्प्लीमेंट करोगे, उसके ऊपर बार लगाओगे, सो इट विल बिकम द एक्सप्रेशन ऑफ द एक्स नॉट गेट. सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी विल डिजाइन द CMOS logic diagram of XOR gate. Now see, depending of this equation, we will design. Depending upon this equation, we will design the CMOS logic diagram. अब देखो, एक चीज हम बताएंगे फिर से. What I have told you, in pull-up network, the AND connection will be in parallel and OR connection will be series. आप एक ही चीज याद रखो, पुल-अप नेटवर्क में एंड मेरा जाता है पैरेलल कनेक्शन में. अगर एक लाइन, एक स्टेटमेंट आप याद रखोगे, ऑटोमेटिकली बाकी सारा आपको याद होता जाएगा. पुल अप में एंड पैरेलल है, तो पुल डाउन में क्या हो जाएगा, एंड मेरा आ जाएगा सीरीज पे. और पुल अप में एंड पैरेलल है, तो और हो जाएगा मेरा सीरीज पे, और पुल डाउन पे और आ जाएगा मेरा पैरेलल पे. एक अगर आप पूरा याद रखोगे तो बाकी सारा ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा. सिर्फ आप इतना याद रखो, पुल अप में एंड विल बी पैरेलल, दैट्स इट. और बाकी ऑटोमेटिकली द ऑपोजिट विल गो फॉर द अदर थिंग, राइट. सो इस इक्वेशन को हम ऊपर में लिख लेते हैं यहाँ पे. दैट इज माय y इक्वल टू a bar b bar plus ab. So now we will draw the logic diagram, CMOS logic diagram out of it. So first I will draw the pull down network. This is my output. From this, what we can see, A and B both are in AND connection, right? A bar B bar is in AND connection, और pull down network में AND connection क्या हो जाएगा? This will come into series. ये जो चीज हम लिखे थे स्टार देके आपके क्लास में, in case of pull down network, AND connection in series or connection in parallel. So we are drawing the pull down network AB in series, and this is consist of NMOS. This is my A and this is my B. A bar, this is my B bar, right? अब देखिए, AB is also in series. So what will happen in case of pull-up network? This AB, as is it is in AND connection, this will come into parallel connection. So now I will draw the pull-up network for this. So this is my VDD. A and B is in parallel connection. This is PMOS, A bar. This is B bar. और ये भी है मेरा this is my A and this is my B. And ये दो है मेरा और कनेक्शन पे, so this will come into series. इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके डिजाइन करेंगे तो the equivalent will be look like this. The equivalent will be like this. This is my VDD. A bar B, 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 sorry, A bar B is my A, B bar. Next here I'm taking the output. इसको देखो, इसको बस यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करके ड्रॉ किए. सिंप्लीफाई किस लिए किए? ताकि हम क्या किए, इसमें ये जो A
ए बी जो है इसको हम एक तरफ लिए, मतलब ए बार बी को एक तरफ लिए और ए बी बार को एक तरफ लिए। बाकी सेम है, क्योंकि इसको हम ऐसे उल्टा ड्रॉ करते बात सेम ही आता मेरा, राइट? इसको बस हम ऐसे यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके ड्रॉ किए, नथिंग एल्स देन दैट, राइट? नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल चेक द फंक्शनेबिलिटी। मानिए इसके ट्रांजिस्टर्स को हम Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 and Q8। अभी देखिए अगर इसको हम और थोड़ा डिटेलिंग में ड्रॉ करते, देखिए ये जो ए बार है, ये ए बार तो हम लोग को ऐसे नहीं मिलता, मीन्स ए बार कहाँ से आ रहा है, आपका ए है उसके अंदर एक नॉट गेट है, फिर ये ए बार आया, लाइक फॉर बी। बट सीमॉस डिजाइन में हम क्या करेंगे, VDD this is my output, this is my input। नॉट गेट के जगह एक इन्वर्टर, CMOS इन्वर्टर लगा देंगे। मीन्स बिफोर दिस ए बार वी ऑलरेडी हैव दिस सर्किट इन बिटवीन, मीन्स एक CMOS इन्वर्टर इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड देयर। सर्किट दिखने में कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो जाता, इसीलिए हम क्या किए, सिर्फ ए बार से उसको रिप्लेस कर दिए। नाउ अभी आपका जो बुलियन एक्सप्रेशन है, व्हाट यू विल कंपेयर, यू विल कंपेयर द बेसिक ट्रूथ टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस टू दिस। सो नाउ सी फ्रॉम दिस ए बी, इस पे बहुत ट्रांजिस्टर्स है, 8 टोटल ट्रांजिस्टर है। देयर विल बी Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, then Y is your output. So AB can be of combination 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. फर्स्ट देखिए जब मेरा इनपुट 0, 0 है, सो देखिए 0, 0 जब है तो what will happen? A is 0, so A bar will become 1. B is 0, B bar will be 1. Likewise, in case when A is, यहाँ पे मेरा 0 है, यहाँ पे भी मेरा 0 है. So coming to the upper part, when A is 0, A bar will be 1, so here to here it will come 0, right? So B is my 0, here it will come 1. Now from this, A is 0, it will become 1, it will come here it is 0, and here B bar 0 होने से ये 1 हो जाएगा, sorry, 0 means 1 and यहाँ पे 0 means 1, 1 means it will provide 0 to it, 0 means 1 means it will also become 1. So now see from this, sorry, this will also become 0. 0 होने से ये 1 हो जाएगा, 1 will become 0, right? So see from this circuit, what happens? When A is 0, B is 0. A की जगह हम 0 दिए, A means 0, so A bar become 1. 1 यहाँ पे आ जाता है, it will become 0. B is 0, B will become 1. B is 0, so my B bar will become 1 and it will provide 0 over here. और A पे 0 है, so it will provide 1 over here. So इसमें क्या हो जाएगा? My Q1 will be off. बस F लिख रहे हैं हम. Q1 will be off, Q2 will be on. And यहाँ पे Q3 is on, Q4 is off. यहाँ पे देखिए Q5 and Q6 both are on. And these two both are off. So now यहाँ पे देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है. So VDD is not getting a path to flow to the output. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? The output will be connected via this path. Means current is drawing from ground, so the output will become 0. And for 1, 1, let's check it for 1, 1. For 1, 1, what will happen? If I am giving B equal to 1, B bar will become 0. Here it is 0. Likewise for A also. And here I have put in 1, 1. So 1 has been given here, 1 has been given here. So for this thing,
If my A equal to 1, it will become 0. If B equal to 1, it will become 0. If B bar is 1, sorry, B equal to 1, it will be 0, then it will become 1 here. And for A bar also, it will become 1 here. So what will happen in case of 1, 1? Q1 will become on, Q2 will become off. Again देखिए, this will become, Q3 will become 0, means off, and Q4 is on. And for the pull down network, Q5 and Q6, both are off. And Q7, Q8, both are on. So again what happens? VDD cannot get a path to the output क्योंकि यहाँ पे ये broken circuit है, यहाँ पे ये open circuit है. So it will flow to the output and draw the current from ground via this path. So what will become? Again my output will become 0. So now check it for 0 and 1. For 0 and 1, suppose A is 0. So take A0. A0 means this will become 0. A0 means it will become 1 and this will become 1. And here B is 1. A0, B1. B1 means यहाँ पे 1 and B equal to 1 means it will become 0 after B bar and it will come 0 over here. And for the upper part, what will happen? A is 0. Let's check for A0. A0 means it will become 1 over here. A0 means 1 here, it will become 0. So now B is 1. B1 means this will become 0. 1 means 0 and B equal to 1 means it will, after B bar it will be 0 and 0 will be 1 again here. So what happens? This Q3 and Q4 both are open. Means short circuit, means both are connecting, creating the connecting path as both the transistors are on, Q3 and Q4. See, my Q3 and Q4 is on. And both the Q1 and Q2 both are off. So here see, here what happens? Q5 is on, Q6 is off. Q5 is on, Q6 is off. And likewise, Q7 is off, Q7 is off and Q8 is on. So see, from the pull down network, as it is Q5 is on and Q6 is off, it is not creating a path. Here Q7 is off and Q8 is on. So hence this is also not creating a path. From where we are getting a path? Because these two transistors are on, we are getting a path from VDD to the output via this path. So what happens as the current is drawing from the voltage source, it will become 1. And from the last thing, 1, 0, what will happen? For 1, 0 means A is my 1, A is my 1, so this will become 1, A is my 1, so this will become 0, B is 0, so it will give 1 over here, B is 0, it will give 0 over here. So for the pull down network, what will happen? Q5 is off. 1 minute. A bar means 0. A bar was 1. 1 will be 0. 0 will put 0. Means Q5 is off. Q5 is off. And Q6 is on. Next, this will be on. And this will be off. So for the pull down network, what we have already determined that the pull down network is not drawing current from output, from ground to output, because here one is open and one is off and one is on and another one is off. So it is not creating a path towards output from ground. So ये part मेरा खत्म हो गया. So now we will look into the upper part, means the pull out network. Pull out network के A is my 1. So I am putting A is 1. A is 1 means it will become 0. So here it will become 1. And B is 0. B is 0 means it will become 1 over here, right? And again, A is 1. A is 1 means it will become 0 over here.
and B is 0, B0 means it will become 1 and again it will become 0 over here. So my Q3 and Q4 both are switched off. Q3 and Q4 both are off and Q1 and Q2 both are 1. So the current will be conducting from VDD to the output via this path. So my output will become 1. So if you compare the XOR Boolean truth table, that was your 0, 1, 1, 0 to the final CMOS logic output, it will be same. So this is your CMOS logic representation using XOR gate. Is it clear for everyone? Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay, fine. So now what we will do, we will design the XNOR gate. So now it is your XNOR gate. Design using CMOS logic. This is very much important. The XOR gate is very, very important. So next is your XNOR gate. So what happens? Let us first draw the Boolean expression and the truth table of it. XNOR gate looks like this of 2 input, which is denoted as A or B whole bar, or like this. And the Boolean expression A bar B bar plus AB. This is your Boolean expression. Next, the truth table. So it is for 2 input 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So it will be the opposite of XOR gate. Why? Because we are giving a complement over it, means we are giving a NOT gate above the Boolean expression of the XOR gate. So here it was 0, 1, 1, 0. Here it will become 1, 0, 0, 1. Right? So first step, what you will do? Complement the Boolean expression. After complementing this Boolean expression, what you will get? It will give the Boolean or logic expression of XOR gate. Means this works on vice versa process. अगर आप XOR की Boolean expression को NOT gate के through pass करोगे, it will give you the expression of XNOR gate, and XNOR gate के Boolean expression को आप complement करोगे या फिर NOT gate के through pass करोगे, it will give you the Boolean expression of XOR gate. But why we are complementing this equation before designing the logic gates? Because in case of logic gates, मतलब CMOS logic, it's basically जो हम draw करते हैं ना, means ये जो हम लोग draw करते हैं, gates जो draw करते हैं, this is what? This is nothing but a CMOS inverter. अगर हम उल्टे को डिजाइन करेंगे तभी तो हमको सीधा मिलेगा ना, क्योंकि CMOS inverter always it always provide you the opposite output. राइट मीन्स अगर आप 0 दे रहे हो तभी आपको 1 मिलेगा. राइट, दिस इज प्रोवाइडिंग. अगर आपको मानिए आपका आउटपुट में 1 चाहिए तो आपको क्या करना होगा? यू हैव टू प्रोवाइड 0 टू गेट आउटपुट 1, क्योंकि इट इज गोइंग थ्रू अ CMOS इन्वर्टर, क्योंकि ऑल दीज आर CMOS इन्वर्टर्स. राइट, so to get 1 as in output we have to provide 0 to its input. So what we are doing to get the proper output,
प्रीवियसली वी आर ऑलरेडी कंप्लीमेंटिंग द लॉजिक, पहले से हम लॉजिक को इन्वर्ट कर दे रहे ताकि हमको जो डिजायर्ड लॉजिक है वो मिले, इसलिए इनिशियली वी आर कंप्लीमेंटिंग द लॉजिक, राइट? So for the XOR gate, what we will do after this, what we are getting? We are getting the expression of A B bar plus B A bar. So this is the expression of your XOR gate, right? अभी हम लोग क्या करेंगे? We will design this XOR gate representation using CMOS logic to get the XNOR gate representation using CMOS logic. Right? So let us draw it. The Boolean function is y equal to a bar plus a bar b. Right? So a b bar plus a bar b. So what we will do? We will design this logic using CMOS logic. First thing, we will draw the pull down network. That is A. These are in series. That is my A and B bar. And here it will come like this. A bar B. This is my pull down network. हम फिर से इसको नहीं दोहराए, कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल है ये आपको समझ में आ गया होगा अब तक. एंड फॉर द पुल अप नेटवर्क, दिस इज माय VDD. मैं सिंप्लीफाई करके ही डायरेक्ट ड्रॉ कर रही हूँ इसको. आपका A bar, this is your B. A bar and B will come one side and here it will become A and B bar. So पहले मीन्स इन दोनों को पैरेलल में करके, इसको सीरीज में करके, इन दोनों को पैरेलल करके जब इसको सीरीज में ड्रॉ करते उसको हम सिंप्लीफाई जैसे हम पहले किए थे, इसको ड्रॉ करके बस क्या कर रहे, बस सिंप्लीफाई करके इसको ड्रॉ किए. डायरेक्ट हम इसको सिंप्लीफाई तरीके से ड्रॉ किए, राइट? सो नाउ व्हाट विल हैपन, इसको अगर हम थोड़ा इलेबोरेटली डिस्क्राइब करते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8. A B दो इनपुट है, Q1 Q2 Q3 Q4 5 6 7 8. This is Y output. Input is my 0 0 0 1 1 0 1 1. So let's start from this. So initially it was my 0 0. A0 means it will become 1. It will give 0 over here. B is 0. As B is 0, it will give 1 over here. Here B equal to 0, it will become 1 and again it will give 0. A is 0, it will give 1 over here. Right? 0 0 हो गया. 0 0 के बाद आ रहा है, सॉरी एक सेकंड, 0 0, यहाँ पे it will become 0. B0 means it will give 1. A means A0 means it will give 1. B0 means it will give 0. एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है. A0 means it will be 1. 0 means it will be conducting path. इसको अगर नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, B bar
Suppose A is 0, it will become 1. B is 0, it will become 1, it will give 0. So to make it 1, what I have to do? I have to put B over here. So if B is here, so B is 0, so it will become 1. And for here, it will be my A bar. A bar is A is equal to 0, and 1, it will become 0. Okay, check it from this output. ए बी एक तरफ होगा और ए बार बी बार एक तरफ होगा, राइट? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए और बी एक तरफ होगा, ए बार और बी बार एक तरफ होगा, right? So from this what we will get? A and B both are conducting. If this is also 0, so this will become 1, and this, if this is 0, this will also become 1. And for the downmost part, it is not conducting, means here Q5 is off, Q6 is on, 7 is on, 8 is off. And for Q1 and Q2, both are on. And this both are off. ये दोनों ही ऑफ है, ये दोनों ही, यहाँ पे देखो दोनों ही ऑन है, दोनों ही ऑफ है. और नीचे पे क्या है? ये ऑन है, ऑफ है, ये ऑफ है, ये ऑन है, ये ऑन है, ये ऑफ है. So in the output is drawing from VDD to this side. So my final output will become 1. And for the next one, what will happen? For the next, suppose both are 1 1. If both are 1 1, see, यहाँ पे 1 है, it will become 0. 1 है, it will become 0. अगर if both are 1 1, both will become 1 and 1, because it will be again become 0 in the intermediate. It will provide 1. It is 0. It will provide 1. And for the lowermost part, what will happen? For the lower part, see, my A is 1, so it will be 1. B is 0. Here it will be 0, and here it will be 1. So the opposite thing will happen. This will become off, on. This will be off. This will be off. This will be on. And for here, Q1 and Q2 both will be off, and then Q1 and Q3 and Q4 both will be 1. So my output is conducting from this path towards output. So again it will become 1. And from any of this combination, let me show you one combination. What is that? Is my 0 and 1. Suppose A is 0, it will be 1, and B is 1, it will be 0. Means Q1 is conducting, this is on, this is off. And for this part, if A equal to 0, means A agar 0 it will become 1. 1 means it will become again 0. So Q4 is not conducting. This will be on, off, and this will be on. Right? So for this, what will happen? For this, you can see for the downmost part, A is 0, means it will be 0. B is 1, it will be 0. A is 0, it will be 1, and B is 1, it will be 1. So current is conducting from this path towards output, means it will be 0. Means these two are in on condition. Means these two are on and these two are off. So my current is conducting from ground towards output, so it will become 0. Hence in this one also you will get 0. Let me check it once. Means अब check करो, A 1 है, ये 1 है, B 0 है, it will be 1. Means both are becoming 1. B Q6 and Q5, these both are on, and here both will become off. क्योंकि A bar 1 है, it will be 0, means off, and B is already 0, B is off. So my current is conducting from this path towards output, so it will become 0. और अपर वाला चेक करोगे, जो इसके ऊपर हुआ था, देखोगे इसका ऑल्टर हुआ रहा है, ये ऑफ है, ये ऑन है. So this is the truth table of
XNOR गेट यूजिंग CMOS लॉजिक, और यहाँ पे अगर आप देखोगे CMOS लॉजिक का क्या था, 0110, इट इज सेम एज, सॉरी, वन कैसे हो गया, extremely sorry. So this is your XNOR gate. XNOR gate का truth table क्या था, 1001. So this is your 1001. Actually I have shown you in the XOR gate. So इसका उल्टा हो रहा है, सिर्फ देखिए 0110 था XOR में, और XNOR में क्या है आपका 1001. So this diagram output is also 1001. So hence it is the CMOS logic design using of XNOR gate. So this was your XOR gate and this is your XNOR gate. फंक्शन देखिए सबका सेम ही है, बस इन्वर्ट हो जाएगा PMOS के लिए, NMOS के लिए उसका सेम लॉजिक जाएगा. बट while drawing a Boolean expression, always you have to remember that in case of pull-up network, AND will be parallel, OR will be series, and in case of pull-down network, AND will be series and OR will be in parallel. एक सर्किट आपका बुलियन सर्किट का ड्रॉ करके आपके क्लास को हम खत्म करेंगे. Let us draw any Boolean expression. Suppose हम लोग arbitrary ले रहे हैं, that is y is my, कुछ भी एक ले रहे हैं, y equal to a into b plus c plus de. So to simplify it, what we can do, we can write it like this, ab plus bc plus de. Simplify करके इसको हम ड्रॉ किए, right? So sorry, ab into ac. So to draw this, what will happen in case of pull-up network? ये जो है ये सारा मेरा AND connection है, and these are connected via OR gates. So इसको अगर हम simply logic से डिजाइन करेंगे, simply logic gates के हम साथ हम इसको डिजाइन करते तो कैसा दिखने में होता है? A B, this is going to an AND gate. It is becoming like this, A and B. Again my A and C passing through an AND gate, it will become AC. And DE after passing through AND gate, it will look like DE. So these all are going through a OR gate. So final output will be AB plus AC plus DE. So this is the representation using a basic logic gate, right? Basic logic gate. So now we will draw is using CMOS logic. CMOS logic में हम क्या करेंगे? These two are in AND connection. So first we will put a VDD. Next, for the pull-up network, this is the PMOS. Here it is your A, here it is your B. Again, this is your C. This is your A. Either you can draw A like this, or you can take input from here also, right? The third one is your D and E. This is your E. This is your E. Sorry, D and E. So these three are in series, as because here it is connected via OR connection. So for the pull down network, here I'm taking the output, and for the pull down network, what will happen? This AND connection will be in series. Here is my A, here is my B. Here is your A, this is C. This is D, and this is E. So if this is your Boolean expression, so you can, this is your basic logic representation of it, and this is your CMOS logic representation of it. One more thing you need to remember, जब हम लोग एक Boolean expression से CMOS logic को डिजाइन करते हैं,
तो आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आप कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, जैसे मानिए डी मॉर्गन्स थ्योरम, फिर डुअलिटी प्रिंसिपल, जितना सारा थ्योरम था ना, जैसे प्रिंसिपल था ए इंटू ए बार इक्वल टू 0, ये सब जो आपका चीज था, उससे आपको क्या करना होगा? फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, मिनिमाइज द बूलियन एक्सप्रेशन. Then draw logic representation. Why we minimize the Boolean expression? क्योंकि हम लोग का desire क्या है? The main purpose or the main desire of us to draw or to design a logic means to design a circuit using less number of logic gates. जितना हम कम use करेंगे gates, but to design the same logic, that is our main motto. क्योंकि VLSI में क्या होता है, हम लोग सेम लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए जितना कम आईसी यूज करेंगे, so the functionality of the circuit will become higher. मीन्स हम सेम फंक्शन को डिजाइन कर रहे हैं यूजिंग लेस नंबर ऑफ गेट्स, और जितना सारा लेस नंबर ऑफ गेट्स को हम लेके डिजाइन करेंगे, वी कैन इक्विप more logics into a same board. मीन्स एक ही बोर्ड को यूज करके, मानिए हमारे पास एक बोर्ड है ऐसा, तो इसी बोर्ड पे हम क्या कर रहे हैं, सपोज इस पार्ट में एक फंक्शन के लिए हम सर्किट डिजाइन किए, सो अगर हम गेट्स कम यूज करेंगे, मानिए पहले इतना सा स्पेस लगता था हमको डिजाइन करने के लिए, अब हम इतना सा स्पेस में इसको हम डिजाइन कर रहे हैं, कैसे? बाय मिनिमाइजिंग द बूलियन एक्सप्रेशन, वी आर decreasing the amount of ICs using or designing a particular logic. तो हम लोग कम IC में उसको डिजाइन कर रहे हैं, so it will take smaller space than previous. So VLSI में हम पहले दिन बताए थे, in every 2 to 3 years the area or the circuit area is get half and the number of IC will get doubled. Means more number of logics can be inbuilt in a particular area, but what will happen? The previous logic means the existing function is taking the reduced space of using less number of device to it. कैसी कम यूज कर रहे हैं, एरिया उसका कम हो रहा है इसीलिए, right? So my main motto is to minimize the Boolean function, then you will draw the CMOS logic from it. किसी का कुछ डाउट है? अगर आपको कोई भी बुलियन फंक्शन दे दिया जाएगा, सपोज y इक्वल टू दे दिया गया a इंटू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, आप ड्रॉ कर लोगे ये चीज यूजिंग सीमॉस लॉजिक? कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बताओ मुझे. रिस्पॉन्ड करो, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? समझ में आया या नहीं समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, fine. So I will give you some assignments in your coming assignment to draw some Boolean functions using the CMOS logic. वहां पे मुझको समझ में आ जाएगा आप लोग कितना समझे हो ये चीज. इसलिए हम बार बार पूछ रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आपका ये आता है, ये डिजाइन करना using the CMOS logic, because this is the very basic thing of VLSI logic design. So ये जो आज का है ये हम Google Classroom पे अपलोड कर देंगे. एंड हाँ बोलो, किसी को कुछ पूछना है? मैम कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करवा दीजिएगा ना. ठीक है, एक काम करेंगे, नेक्स्ट आपका जो मंडे का क्लास है उसमें हम पहले कुछ और बुलियन एक्सप्रेशन, अभी तो आपका लोग का क्लास है ना 12 बजे से, तो Yes, ma'am. अभी हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मंडे का जो क्लास है उसमें हम कुछ बुलियन फंक्शंस और 4-5 कर लेंगे, और आप लोग खुद से बोलोगे मैम ये फंक्शन को बनाइए, ऐसे ऐसे करके कुछ 4-5 एग्जाम्पल और कर लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपके लिए. Yes, ma'am. ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू सो मच. मैम कोई बुक बता देते. बुक देखिए अभी आपके पास अवेलेबल है कुछ VLSI का? VLSI का बुक एक है, हम राइटर देख के आपको बता देंगे. अभी आपके पास है क्या कुछ VLSI का अवेलेबल बुक? कहाँ से लाओगे आप बुक? नो मैम. तो एक काम करते हैं ना, जो अभी आपको हम पढ़ाते हैं ना उसका थोड़ा थोड़ा करके वर्ड फाइल में नोट करके आपको भेजते हैं, तो उससे शायद आपको आसानी हो जाएगी.
राइट, क्योंकि अभी आपके पास तो अवेलेबल नहीं होगा ना कोई बुक, तो ये रनिंग Yes. नोट भी आप रखिए, बाकी इसका वीडियो भी आपके पास है। और एक चीज हम करते हैं, आपका एक वर्ड फाइल में धीरे धीरे नोट्स बना के आपको भेजते हैं, अब उसको भी देखते जाओ साइड बाय साइड, ये काफी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? बिकॉज दिस इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, इट विल टेक मार्क्स लाइक मैथमेटिक्स, मैथ्स की तरह आपको आएगा सब्जेक्ट में मार्क्स, क्योंकि उतना थियोरी नहीं है ना, बस आपको ये सब डिजाइन करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है? चलो, आपका नेक्स्ट क्लास है। थैंक यू एवरीवन।